Now, chapter second, that is polynomial. That is what? Polynomial. In exercise 2.2, question number first is over, question number second is over, question number third का first part भी मैंने करा दिया है ना. The question is what? The question is verify whether the following are the zeros of polynomial. Whether the zeros of polynomial. The second question is, see, second question. Second question is p of x 5x minus pi. P of x 5x minus pi, and the value of x is 4 upon 5. The value of x is 4 upon 5. It means at the place of x we write here 4 upon 5. Now see, p 4 upon 5 is equal to 4 upon 5 minus pi. P 4 upon 5 is equal to 5 से 5 cancel. That is 4 minus pi. That is what? 4 minus pi. Somebody joining late. No? That is what? 4 upon 5. It means कि this is not the zero. यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करें. पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करना है. तो यहाँ पे हम 4 माइनस पाई 0 हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो पाई की वैल्यू का किस कंडीशन में रख देते? When we will get here 22 upon 7. अगर यहाँ 22 अपॉन 7 आ जाता तो हम पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रख के और हम 0 लिख देते. तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो. क्या लिखेंगे? नो. x is equal to 4 upon 5 is not the zero of p of x. No, x is equal to 4 upon 5 is not the zero of x. अब मैं बेटा आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करूँ. ठीक. बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा. नहीं आएगा तो मैं आपको फिर बाद में करा दूंगा. ठीक है. मैं कल ही करा दूंगा जो भी डाउट होंगे. तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लेना. मैं आज वीडियो इसको भी भेज दूंगा आपको. Now, two questions are there. First one is sixth, p of x lx plus m. P of x lx plus m, and the value of x is given, minus m upon l. This one is sixth one question. Minus m upon l. So at the place of x, we write here at the place of x we write here minus m upon l. Now see, p minus m upon l is equal to l minus m upon l plus m. L से l cancel. Minus m upon l is equal to minus m plus m. P minus m upon l, that is what? 0. Minus m plus m, that is what? 0. So yes, m is equal to minus m upon l is the zero of p of x. P of x. ठीक है. इसको आप नोट कर लो इसको.
and one more question, question number 7. Question number 7. Let's see question number 7. Question number 7 is what? In question number 7, p of x is 3x square minus 1. P of x is 3x square minus 1, and the value of x is minus 1 upon root 3. Minus 1 upon root 3. Now see, the degree of this polynomial is what? 2. This is a quadratic polynomial. It means इसके आंसर्स कितने आना चाहिए? 2. कितने आंसर्स आना चाहिए? 2. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी डिग्री उतने आंसर्स. तो इसके आंसर्स कितने आना चाहिए? 2. तो यहां पर इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज दी हैं? 2 वैल्यूज दी. फर्स्ट वन इज माइनस रूट अपॉन, और फिर से ये क्वेश्चन लिखेंगे हम, p of x is equal to 3x square minus 1, and this time x is equal to what? X is equal to 2 upon root 3. 2 upon root 3. 2 upon root 3. It means 2 zeros are given, or we can say two values of x are given. So first we solve it by putting minus 1 upon root 3. P minus 1 upon root 3 is equal to 3 minus 1 upon root 3 whole square minus 1. Minus 1 upon root 3 whole square minus 1. Next line, p minus 1 upon root 3 is equal to 3. The square of minus is what? Plus. The square of minus is what? Plus. The square of 1 is what? 1. The square of root 3 is what? 3. जब भी रूट पे स्क्वायर लगता है तो रूट हट जाता है, रूट कैंसिल. माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल. p माइनस 1 अपॉन रूट 3, दैट इज 1 माइनस 1. p माइनस 1 अपॉन रूट 3, दैट इज व्हाट? 0. क्या लिखोगे? यस. एंड x is equal to minus 1 upon root 3 is the zero of given polynomial. Given. तो यहां पे एक्चुअली जब 2 वैल्यूज गिवन रहती हैं तो अपन ये उसको एज ए ट्रीट करते हैं कि हमारे पास 2 क्वेश्चन, नॉट 1 क्वेश्चन, हमारे पास 2 क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन जैसा उसको ट्रीट करते हैं. हम उसको 2 क्वेश्चन जैसा ट्रीट करते हैं. ये कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन. First we put minus 1 upon root 3, then we will put x is equal to 2 upon root 3. और दोनों के आंसर यस भी हो सकते हैं, दोनों के आंसर नो भी हो सकते हैं, और किसी एक का आंसर यस और किसी दूसरे का आंसर नो भी हो सकता है. ठीक है, तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर. सो वी विल पुट हियर एट द प्लेस ऑफ x 2 upon root 3. नाउ सी, 2 upon root 3 is equal to 3. 2 upon root 3 whole square minus 1. p 2 upon root 3 is equal to 3. Now see, the square of 2 is what? The square of 2 is 4. And the square of root 3 is what? 3 minus 1. 3 से 3 cancel. Now see, 2 upon root 3 is equal to 4 minus 1. p 2 upon root 3 is equal to 3. तो क्या यहाँ 0 आया? No. क्या आया अपने पास? 3. It means this is not 0. So we write here no. X is equal to 2 upon root 3 is not the zero of p of x. Not the zero of p of x. Is it clear?
इज नॉट द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हाउ मेनी वैल्यूज आर गिवन, 2 values are given. Why 2 values are given? Because this is quadratic polynomial. So its power is what? 2. So how many zeros are there? 2 zeros are there. 2 zeros are there. तो x की एक वैल्यू दी है, हमने उससे चेक कर लिया whether it is zeros or not. इसमें आ गया yes it is 0. और सेकेंड वैल्यू इज गिवन 2/√3, इसमें 0 नहीं आया, इट मीन दिस इज नॉट 0। ठीक है, तो बेटा इसमें ऑल पॉसिबिलिटीज आर व्हाट, बोथ द जीरोस, बोथ नॉट द जीरोस, वन इज यस एंड वन इज नो, दिस वन। तो ये 2 टफ क्वेश्चंस थे, तो आपका होमवर्क भी आप नोट करते जाओ साथ में। होमवर्क इज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करा रहा हूं। तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप पूरे क्वेश्चन करेंगे 1st to 8th, और 1st to 8th में कोई भी डाउट होगा कल मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके, और आज टाइमिंग अपन फिक्स है, आज रात को 10 बजे तक आपको सबमिट करना होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, फाइंड द जीरोस। नाउ दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द जीरोस। Find the zeros of polynomial in each of the following cases. Now this time we have to find the zero. ठीक है, अब हमें जीरो फाइंड करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज p of x is equal to x plus 5. The first question is p of x is equal to x plus 5. Second question is p of x x minus 5. p of x x minus 5. Third question is, the third is p of x 2x, p of x 2x plus 5, p of x 2x plus 5. Third. Fourth is, the fourth question is 3x minus 2. 3x minus 2. The fifth one is p of x. p of x is equal to 3x. p of x is equal to 3x. ठीक है, चलो बाकी रिमेनिंग में बात करें। So now in this condition we have to find zeros, but not say zeros, because there is no any quadratic polynomial. So we will get only one zero. So we are finding zero. Is that clear? Not zeros. If they are quadratic or they are cubic, then we will find zeros. They are all linears. Think, very easy question. Now we write here question. The second line is x plus 5 is equal to 0. The next line is x is equal to minus 5. This is our answer. This is our answer. X is equal to minus 5. X is equal to minus 5. This is our answer. 0 means what? If we put x is equal to minus 5 in this polynomial, what we will get? We will get 0 as a answer. 0 as a answer. तो बेटा दो लाइन के ही क्वेश्चन। सी सेकेंड वन, नेक्स्ट लाइन x minus 5 is equal to 0. तो व्हाट अबाउट x? x is equal to 5. The x is equal to 5. It means if we put it means what?
It means if we put 5 at the place of x, what we'll get? We will get 0. Now next question is what? 2x plus 5 is equal to 0. The second line is what? 2x is equal to minus 5. The next line is what? Minus 5 upon 2. This is our answer. This is our answer. Now next, 3x minus 2 is equal to 0. Next is 3x is equal to 2. So x is equal to what? 2 upon 3. X is equal to what? 2 upon 3. Now the next question is 3x. So next line is 3x is equal to 0. 3x is equal to 0. So what about x? X is equal to 0 upon 3. So x is equal to what? 0. In previous class, if numerator is 0, then the answer is 0. If numerator is 0, then the answer is it clear? And if denominator is 0, then it is not defined. Not defined. So if numerator is 0, then the answer is what? 0. So take screenshot and note. Now next question is now question number 6 is complete. 6. Okay, 7. 6th. P of x is equal to ax. 6th. P of x is equal to ax. And 7th. Cx plus d. P of x is equal to Cx plus d. P of x is equal to Cx plus d. Now the next line is what? Ax is equal to 0. So x is equal to 0 upon a. So what about x? X is equal to 0. If numerator is 0, then answer is 0. If numerator is 0, then answer is. Now see, in previous question there is what? There is 3x. There is 3x. So at the place of 3, they write here a small. है ना? Same question. Now next question is Cx plus d is equal to 0, or we can say Cx is equal to minus d. Okay, so x is equal to what? Minus d upon c. Minus d upon c. This is the value of x. This is the value of x. In this condition, x is equal to 0, and this condition, x is equal to minus d upon c. ठीक है, नोट कर लें. Now this exercise is over. This exercise is over. 2.2. Now we start 2.3. Exercise 2.3. The 2.1, in exercise 2.1, there are all fundamentals of polynomials. In 2.2, again the basic fundamentals are there. Again the basic fundamentals of there. In exercise 2.2. और वो हम सब यूज करने वाले हैं 2.3 and 2.4. in exercise 2.3 and exercise 2.4. ठीक है, तो अगर हम 2.2 को अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो 2.3 हमको नहीं आएगा. तो 2.3 में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा. तो पहले फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और find the remainder. Now there are two theorems. One is remainder theorem and another one is factor theorem. Another one is factor theorem. पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा. ठीक है,
तो पहले अपन क्वेश्चन करना है, फिर अपन थ्योरम में आपको समझा। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। सो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। P of x is already given, x cube plus 3x square plus 3x plus 1। नेमिंग नहीं की थी उन्होंने, नेमिंग हमने कर दी। P of x की नेमिंग हमने कर दी, ठीक है। ये नेमिंग हमने कर दी और ये फाइंड कर दी। P of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1। And or the first question is x plus 1 is given, x plus 1 is given। फर्स्ट क्वेश्चन x plus 1 is given। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे x plus 1, इसकी नेमिंग कर लेते हैं g of x plus 1। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे x plus 1 is equal to 0, so x is equal to what? minus 1। x is equal to what? x is equal to what? minus 1। Now our question is what? Question is x cube plus 3x square plus 3x plus 1। x cube plus 3x square plus 3x plus 1। It means what? It means at the place of x we write minus 1. We write the value of x minus 1. So put the values. So p, that is minus 1, minus 1 cube, 3 minus 1 square, 3 minus 1 plus 1. All the values put in brackets. Okay. Now open the brackets. P minus 1. The cube of minus 1 is what? Minus. If the power are even, then the square of negative sign is positive. And the power of negative sign is odd. This time odd. So the cube is odd. It means the answer is negative. That is what? minus 1. 3. The square of negative sign is what? Positive, because the power is what? even. So the square of negative positive. Is the square of 1 is what? 1. Minus plus minus 3 plus 1. P minus 1. This is minus 1. This is plus 1. Okay. Then okay. Minus 1 minus